wait for 5 more minutes so that everyone can join. So meanwhile एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. So जगदीश जी आपसे ही चालू करते हैं. We can start with you. Okay. Hello everyone. Good afternoon. Myself Jagdish Chudasama from Ahmedabad, and I am into finance sector since last 20 years. And recently I have started. 2-3 years back I have started solar business as well. So I'm more interested into financing, part of solar and all. So I'm doing well in Ahmedabad. It's a huge market, and everyone is, now looking for this green energy. Thank you so much. Great, great, great. Thank you, Jagdish ji. I am seeing today a lot of new faces. So let's start with Devajyoti ji. Sir, you are. Yeah, hi. Am I audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah, I got into the AREM fraternity last year in Delhi during the Renewable Energy Summit. Expo, yes. Yeah, Yes, Expo that was there. I have been into solar since 2016 off and on. And into the solar side, which is the non-subsidy business is what I'm focusing on. And Right. that's why I'm here. And this is something unique, which I'd never heard of providing financial support to housing societies. The Yes. challenges that we will face is housing societies themselves face a challenge in terms of collecting their dues. Right, right. Definitely. So, not on a negative note, but it's wonderful to be here, and it was a great experience connecting there. So I am into the solar side, not the EPC side per se, but into the business generation side. Okay, okay. Got it, sir. So, sir, what are you expecting? Just one question. What are you expecting out of this webinar? I'm expecting that I'll be able to connect with the customer and coordinate with the suppliers and provide a linkage through the ARM platform is one understood, aspect. understood, And understood. should the platform not be able to support, then at least have some idea to suggest to the housing societies if they can reach out to the platform directly. Got it. Either which ways I benefit. Understood, understood, understood. Thank you so much, sir, for joining. Thank you. एक बार रौनक जी से भी बात करें, sir. I'm seeing you for the very first time in this webinar, like for the series of the webinar that we have been doing. So, can you introduce yourself, sir? Yes, so hi everyone. My name is Ronak, and to be honest, I'm joining this for the first time. Even I have not entered any solar business yet. Our business is about the security solutions, CCTVs and all. So my brother is into solar, so he recommended me just to start and to look because I have many societies under my contact. So he suggested me to just go ahead with this seminar. You will know few people which might help you and your contacts. So that's all. I'm here to explore a new part of this whole new system. Great, 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 great. Thank you so much. So, everyone, just one question यहाँ पे कितने लोग, how many of you are into solar business? By solar business, I mean आप लोग, how many of you do EPC? सोलर इंस्टॉलेशन कितने लोग करते हैं यहाँ पे? जैसे एक बार यस बोल दीजिए एक एक करके, if anyone. Yes, मैं करता हूँ. Yes, Okay. we are into EPC. This side. Great. I am actually in between. You can say a yes or a no. Yes. Depends. yes. Great. अच्छा, प्रंदे जी, आपसे एक बार एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन. हेलो. यस सर. हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ और इधर के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसी में मैं जॉब करता हूँ. और मेरे भाई के साथ पार्टनरशिप में मेरा बिजनेस था, जो इलेक्ट्रिकल का लाइन वगैरह इंस्टॉलेशन कराना. अभी हम सोलर में स्विच किया है पिछले 1 साल से. और एक दो Okay. बार मेरा एरम से कॉन्टेक्ट हुआ. वो हिमांशु सर है ना, जो मुंबई में बैठते हैं, उनके जी. एक मेरा इंक्वायरी था 200 किलोवाट का, लेकिन कंज्यूमर के पास फाइनेंसिंग नहीं था. तो मैं एरम से कांटेक्ट करके उनका लोन फाइल बनाया है
तो अभी वो प्रोसेस में है, थोड़ा कुछ क्वेरी है इसलिए बाकी है। बाकी बहुत सारा इधर लोग इंक्वायरी रहता है, लेकिन कुछ फाइनेंस की वजह से क्लोज नहीं हो जाता। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे लिए एरएम के साथ में कि यस सर, क्लोज, हाँ, इंक्वायरी क्लोज होने में बहुत फायदा हो जाएगा इसमें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर वन क्वेश्चन आपसे, हाउसिंग सोसाइटीज में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, अगर हाउसिंग आप सोसाइटी कोई। में वही होता है, देखो जैसे हम लोग के 10 लोग हैं उसमें, और कुछ लोगों का करने का मन रहता है, मुझे ये करना है, और कुछ एक दो चार लोग रहता है वो मुझे नहीं करना। इससे अच्छा है सोसाइटी वाले बोल देते हैं कि आप लोन करा के दे दो, हम हमारा जो मेंटेनेंस का खर्चा जो हम मंथली इकट्ठा करते हैं उसी में से हम वो ईएमआई भर देंगे। ऐसा ये तो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है मुझे अभी, सातारा साइड और महाराष्ट्र में, सातारा और पूना साइड में ये प्रॉब्लम। जी, ओके ओके ओके, गॉट गॉट इट। सो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की होंगी, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद हाउसिंग सोसाइटीज, हाउ टू सिक्योर लोन्स फॉर देम, राइट? मे बी कस्टमर्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? सो टुडे विल केटर ऑल दीज क्वेश्चंस, आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू पीयूष. Piyush looks after the head. He's the head of platform growth at Aerem, right? So he'll start today's session, and after that, we'll address the session to Hardik sir. So Thanks, Tanmay. I hope I'm audible. Let me share my screen. Screen sharing. बाकी सबको कैसे सुनाएंगे? We did not. Okay, so good evening, everyone, and thanks for joining us today. As many of you who would have been joining maybe second or third time or more time, आप सभी को रियलाइज होगा कि हम एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहे हैं. वी स्टार्टेड विद डिजाइन एंड वॉट एवर कैन एक्चुअली हेल्प आउट EPCs इन अंडरस्टैंडिंग और ग्रोइंग द बिजनेस. उसी थीम पे हम लोग काफी सारे वेबिनार्स कर रहे हैं. सो दिस इज प्रोबेबली 15th or 16th webinar in that line. And in fact, in between, we also invited some of the industry experts, module manufacturers, inverter manufacturers, to come and speak about the technical aspects of technical aspects of module or respective components. In that series today, आज हम लोग कर रहे हैं, as Tanmay said, the webinar is about solar financing for housing societies. As after PM Surya Ghar Yojana launched, जैसा आप सभी को पता है कि there is a lot of focus on the residential side. और residential side में especially in the urban centers, residential welfare societies or housing societies are the very important customer. उस context में financing for them becomes a very critical aspect. और उसी के ऊपर हम थोड़ा सा आज deliberate करेंगे. We have an expert, in-house expert also, who will be taking over on the financing part. But before that, I'll quickly introduce you to the Aerem as a platform. So this slide is actually explaining the complexities of EPC business. So we definitely understand your complexity, and that's why we are trying to empower you through various means. So the complexities of EPC business is one is that आप लोग का mostly जो communication होता है जो stakeholders के साथ वो हो रहा है email पे या फिर calls पे या फिर SMS पे, WhatsApp पे, राइट? इसमें फॉर एग्जांपल जो मोस्टली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, इट कैन बी रिलेटेड टू सप्लाई चेन फाइनेंस, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ आपका लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ होता है, जिसमें आपको जो अमाउंट है सप्लाई चेन फाइनेंस का, बी टर्म्स एंड कंडीशंस, डॉक्यूमेंट्स, ROI, everything has to be provided by you or has to be exchanged with the stakeholders. But coincidentally, it happens over all any of this communication channel, which is WhatsApp, SMS, email. Then comes the solar loan for customers.
अगेन देर इज अ चैलेंज जस्ट लाइक प्रीवियस वन, आपको यहाँ पे भी काफी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है अबाउट लोन अमाउंट, टर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लीड टाइम, स्टेटस। अगेन आपको विजिबिलिटी का चैलेंज आता है। Third is the hardware procurement, which is I think the biggest hassle for any EPC. Biggest challenge here is कि आपके पास there would be more than 60 to 70 components और more than 100 components, जिसके लिए आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ probably negotiate करना पड़ता है, discussion करना पड़ता है, और you need to get the inquiry from them, I mean RFQ, availability, code, delivery, everything. So that becomes challenging because multiple stakeholders हैं, multiple distributors हैं और sellers हैं, and it becomes very challenging. Then comes the engineering support. So many a times we have realized कि हमारे जो EPC partners हैं like you face a lot of challenges on the engineering side, especially towards the month end, जब आपको काफी लोड रहता है और probably आपकी जो in-house engineering team है या otherwise जो probably आप खुद भी कर रहे होंगे तो वो bandwidth नहीं मिल पाती है. So that also becomes a challenging aspect because उस केस में आपको किसी आउटसोर्स डिजाइन सर्विसेज को रीच आउट करना पड़ता है. एंड अगेन उसमें सेम चैलेंज है, आप अपनी अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उनका प्राइस क्या है, डिलीवरी कब आएगी, क्वालिटी क्या होगी, स्टेटस क्या होगा, दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर यू. देन कम्स असेट मैनेजमेंट पार्ट. इसमें अगेन एज यू नो, फॉर एनी कस्टमर, एनी ईपीसी, रेफरल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेफरल कब होगा, जब आप उसका असेट मैनेजमेंट देख पाएंगे, आप उसको अप टू द मार्क सर्विस दे पाएंगे, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उस केस में अभी सपोज आपका 5 या 6 इन्वर्टर का पोर्टफोलियो है एंड मॉनिटरिंग इंडिविजुअल इन्वर्टर पोर्टफोलियो सेपरेटली, इंडिविजुअल पोर्टल, that becomes another challenge for you. And the final piece is marketing collaterals. Many a times to engage with potential customer or existing customer, you need some kind of flyers और डॉक्यूमेंट्स जो आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एजेंसीज को रीच आउट करना पड़ता है, उनके पास से वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बनवाने पड़ते हैं, फ्लायर्स वगैरह. सो दैट इज इन द नटशेल चैलेंज. Apart from that, site survey, proposal, etc., these are also challenges which we have gradually capturing in terms of covering you from that side. What it leads to, तो this is the nutshell. आप देखें तो manually intensive हो जाता है process, the complete process is disintegrated. As you can see, there are many aspects to the single business. The value chain is disintegrated. Then comes a multiple interface part, which you can see directly from the slide, that there are so many interfaces which you have to deal with. It leads to time consumption, a lot of time consumption. Low visibility becomes challenge because communication सारा different channels पे हो रहा है. So low visibility becomes a very big aspect of it or side effect of it. Finally, it leads to high cost. Probably, I think at any given time, probably it would be costing 2 to 3% of a project cost. All of these inefficiencies, right? So to solve that, what we have done, Aerem has come up as a one-stop solution for EPCs. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि we are providing solar loan for your customers. Sorry, one step. Yeah. Share back. उसमें ना ऑडियो भी है ना, sharing is done. Just give me a second. Yeah. नहीं, वो फिर से share ही चाहिए. Okay, entire screen. Okay, share. Sound करना share because it's issue. Okay, share हो गया, आप बंद कर दीजिए. Presentation. Hope the screen is visible again. Yeah, so not yet. Yeah, it's there. So as I said, to solve all the problems or complexities of the business, we have come up with a single stop solution, one stop solution. So solar loan is obviously the critical aspect. जहाँ पे भी आपके कस्टमर को फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, so we empower your customer solar journey. Supply chain finance is another critical piece of requirement which removes the capital constraint from your business growth. AAA is our in-house design and project management support service, which enables our EPC partners for the high quality project delivery through top-notch engineering support. Marketplace is something which is providing the procurement from different hardware providers, hardware manufacturers,
and different kind of hardwares also. So that is something what we are providing. And finally, the monitoring piece. So we have a one-stop solution, sorry, the hardware independent monitoring solution, which brings all your inverter portfolio together on one platform. So that is what we are providing as a one-stop solution. And today we have reached out, we have almost 3,000 EPC as our EPC partners, as a partner. Altogether, we have 50 plus years of solar and financing experience. 1,000 plus solar projects have been financed, and 500 plus megawatts have been solar enabled. 25 plus monitoring brands integrated, and 1,600 plus solar projects is what we are monitoring as on today. So on this note, I'll hand over May I the interrupt you for conversation a to minute, my please? Hardik, who will be. Hello? Hello? Yes, sir. Yeah. I just want to have I need a clarification. I have failed to approach either Hardik or Sriram. This is related to, supply chain finance, right? And I am Prashant from EcoVista Global Ventures, Bangalore. And we are a 1-year-old company, and then we are on the verge of registering ourselves as a private limited, thanks to Aerem's support. As in, yes, Aerem support has taken my business leaps and bounds forward. My question to supply chain finance, when I access the Aerem portal or the app, it clearly calls out that I need to be a 2+ years experienced company. Yes. Yes. So Hardik ji, hi. So Yes. Hello. how exactly, as in, how exactly can we mitigate this, sir? So, when a firm is very new, this is a very typical issue we also face in normal term loans, Prashant ji. Yeah. Okay. Where a company is trying to put up a new plant or a new company. Okay. So what we do in these scenarios is, uh, there has to be a certain history, right? So if the firm is very young, very Mhm. 1 year old, 2 year old, if there is a vintage issue that is coming up, then we take the erstwhile company, okay, Mhm. or businesses, or we take that background and take him as a co-borrower. Okay. 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 So this happens, and this what it helps is helping me to show the continuity of business. Correct. Yeah. Okay, Got that is a major thing that we want to mitigate. When you are that. saying that what is the mitigant that we need to showcase. So what we are able, what then by getting that company as a co-borrower, we Mm. can show a continuity, and then Okay. we can assess the loan in a better way. However, I would just want to tell you is it also depends. Supply chain finance is more like a bridge finance. And Correct. since right now supply chain finance, I would just want to delve on one more point. It is Mm. also the weightage is also more on the work order that you have received. Mm. Okay. Supply chain finance is not a LAP loan. It is not a loan against property Mm. or a term loan or a business loan. It is a loan which is Correct. given against a work order where the customer is saying कि आप पहले मुझे deliver करो goods. Mm. Okay. Mm. You deliver certain uh, you know uh, commission certain part, and I will pay in that process. Mm. After that, only that to process. They are not Mhm. ready to give you upfront money, Correct. or they are hesitant to give that person. So what we are, it's a revolving credit. This supply chain finance is like a credit card. Mm. It's a revolving Mhm. credit. And what happens is if the work order is strong, Mhm. if it is a and it showcases, then the weightage is equal. So it is always not only so what I'm trying to say over here is the appraisal is not only merely dependent on the Mm. vintage. It is equally important for the work order to be strong. It is equally important, uh, you know,
that you have delivered certain kind of projects, same kind of project in the past. So it Right. is a mix of things. So it is not only solely just to give you the comfort के it is not only that कि 2 साल का vintage है तो हम लोग loan नहीं करेंगे, you know. Then how are we enabling you guys? Okay, we'll have to, if we have a problem or if we are in lending business, we have to find ways how we can lend you. Last but not the least, हम लोगों ने कभी कभी ये भी किया है, what we have done is we have also taken a collateral from certain EPCs. Okay, so we have tried to mitigate, but the essence of the product is like a working capital. It is not a LAP loan or you're getting, it's not a business loan. Correct. It is a time-bound loan for that particular project. It's a work order based loan. Got that. Thanks for that, Hardik. Yeah, thanks. So now taking on to the before setting up the tone for the main agenda, why we all have gathered over here. I have a supplementary question here to Mr. Acha, Prashant's okay. question. Yeah. We are also a proprietorship concern, but we have recently incorporated. When you are saying you will take the previous organization as a co-borrower, here the same proprietor has got her company incorporated. So in this case, how will you take the co-borrowership? No, so before this, you would be working right, in some capacity. Yeah. So it does not matter, sir. It does not. So we, so again, as I'm telling you, the essence of supply chain finance is not working capital finance. It is not a business loan. It's not a term loan. It's not a CCOD loan. It is for a specific purpose, specific period, time-bound kind of stuff. Okay, I'm not giving you a line of credit for the entire time, like other products of banks. Okay. It is specifically towards that work order. Say, for example, I will give you an example how actually we appraise. You get a 300 kilowatt project. Okay. The customer says you, boss, I will only give you money after I see the delivery of the panel and inverters. Now you and me know, the customer does not know that the OEM company will take the check first and they might deliver in 10, 15, 20, 25 days later, right? Yes. Correct? Okay. Correct. So, so what do we do? You can't leave the project. So what we do is basically for that 15, 20, 25 days, okay, we give you that money to procure the material. Okay. Are you with me? And the material reaches the site and the customer pays in an escrow account, which we have opened up. So you don't lose money. Got it. Sorry, you don't lose business. Sorry, my bad. You don't lose business because of this. This is actually supply chain finance. What people mistake supply chain finance as a credit line, where we give credit to the, where we have lines like for other, term loan or working capital. Was about the vintage. The question was about vintage, and you clarified that you don't, you give the past history of the promoters also, right? So thank you for answering that. Yeah, sure. So Hardik, I have one question for you. Hello. Yes. So I'm Kiran Bhagat from Avanigarva and Ujja. We have got two companies. I'm sorry to interrupt, Mr. Kiran. Can we, of course, I know there will be a lot of questions related to supply chain financing, right? Related to solar loans, it can be residential, it can be commercial. Of course, we'll answer that. We can take a good 10 to 20 minute session at the end. But, coming to housing loan, it again itself is a big session, right? So, can we move forward with the PPT and later in the end we can take all of your questions? Yeah. Okay.
I'm really sorry to interrupt, but of course, I hope everyone has a time constraint. But what we'll do now, we'll definitely I'll put my and Hardik sir's number also in the chat box. We can directly connect as well. I'll park my question. Yeah. Yeah, yeah. I'm sorry, so sorry to interrupt. Thank you, sir. Okay, so moving on, Piyush um, gave you the full background. Why our existence? Where is the core? The ecosystem, and the ecosystem is so strong that Aerem has its own in-house NBFC. We are one of its kind. We are the only NBFC. We are only financial institution which only does solar loans, rooftop solar loans, open access, ground mounted, only solar loans. We don't do any other business apart from solar loans. Okay. Moving forward, we cover the entire gamut, right from commercial and industrial. That is our right from school, colleges, hospitals, MSMEs, industrial manufacturing plants. Okay, we are the only ones from day one till now. We have financed more than 1,000 projects, and we have never taken extra collateral. When I say extra collateral, means a property or a machinery loan or anything. We are a totally dedicated solar loan company. We have learned what solar is, and you all will appreciate if we know what the risk we are taking, we will be able to take that risk far better than others. So that is our power. We are into residential loans also. We are into supply chain finance also, which I've shared with you. The key things that I want to highlight is we are present all across India. We have minimum documentation, zero collateral, as I already shared with you. Quick turnaround. Each of our loan, okay, is digitally enabled. That means customers provide us the documents, we upload them, centrally we underwrite them, okay, and we appraise the case and disburse also centrally. Everything is digital in nature. Moving forward, when I said supply chain financing, of course, there were questions. Today's main agenda why we are here is for housing societies. We started housing societies. We started housing societies 6 months to 7 months back. Okay, not many people were doing housing societies, but by taking so many other things, and their understanding of housing societies was different. There were, of course, the challenges that you see on the PPT right now. If you have dealt with housing societies, you could relate that these are the major ones which, apart from normal C&I case, where the decision makers are only one or two, or there is there's this ownership is very little. The loan taking here, the ownership is different. Complex decision making, okay, multiple stakeholders, trust and credibility issues. You all know that अगर आप सेक्रेटरी बन जाओ अपनी सोसाइटी के, तो सोशल सर्विस में गाली खाने के अलावा और कोई काम नहीं होगा, आप कितना भी काम करो. You will all agree to me, right? So after funding 50-60 cases from last 5-6 months, we have learned, we have listed them, we have jotted down each and everything, where actually the issues come. अरे ईपीसी वुड से, अरे यार थोड़ा फैब्रिकेशन का ज्यादा काम हो जाएगा, ओके, देन इट द कॉस्ट बढ़ गया, अरे नहीं नहीं ये कॉस्ट तो बढ़ गया, हाउ दिस विल हैपन. So many, you would have encountered many such objections. You would agree that the meetings keep on going on. Sunday को ही मिलेंगे, there is no specific time that के Monday to Friday, because they have their own responsibilities and everything.
They will meet you once a week or at such time sure के सारे decision maker एक टेबल पे आ गए. फिर अदर मेंबर्स का क्वेरीज उनके एजीएम में पास हुआ कि नहीं, स्पेशल जनरल बोर्डिंग मीटिंग में पास हुआ कि नहीं, कि दे वांट टू पुट अप अ रूफ स्टोर. So it is a very tiring thing. And since this is today related to financial constraints, okay, we have taken up the challenges we felt that were high on. First is the lack of credit worthiness. When you see, when what we mean by credit worthiness, कि housing societies don't have a CIBIL score. किसी के पास CIBIL score नहीं होता है. They don't take loans, मेंटेनेंस से पैसे जो आए, सिंकिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा रिपेयर्स के कर्जे आए एंड दे में. सो उनका कोई हिस्ट्री नहीं होता है. तो टिपिकली एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को प्रॉब्लम होती है एसेस करने को कि यार इनका बोरोइंग हिस्ट्री नहीं है तो हम इसको लोन कैसे देंगे. यू वुड ऑल अग्री टू मी. सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज बेसिकली द चैलेंज दैट वी हैव फाउंड इज वी सी के द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट दैट सोसाइटी इज प्रूडेंट और नॉट. ऐसा तो नहीं है सोसाइटी है लेकिन काफी सारे फ्लैट्स खाली है या एरियर्स है. सो व्हाट वी डू है वी हैव स्टार्टेड टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन के वी वुड आस्क फॉर अ पेपर. उनकी बैलेंस शीट तो आ जाती है, एवरीथिंग कम्स, उसमें आ जाता है कि आउटस्टैंडिंग कितनी है. सो इफ द आउटस्टैंडिंग इज कंसिडरेबल दैट मीन्स द सोसाइटी इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली, या फिर बहुत सारे कुछ कोर्ट केस या ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है. देन ओनरशिप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम. ओनरशिप क्या है? एज यू ऑल नो, इफ देर इज एनी लिटिगेशन बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ सोसाइटी, then it will go to the register of societies and not to a typical court of law. So what happens is, in certain societies, all all the chairman, secretary, treasurer are different. Some are different, some are common, some are having joint responsibilities. Very difficult. So now who to hold to account? Because if there is a society of 80, 20, 100 members, what do we do? Who do we speak to? Who is the single person whom we can talk to? We cannot talk to 80 people physically, or we not talk to all the members. So what we have learned is the office bearers and the society. In the society, there is minimum eight members board. In certain societies which are less than 32, there are only two people who are running the show. So what we have learned is there could not be a one fit product fix for all. We will have to see every society case as an individual society. Like, for example, if I'm doing a commercial or an industrial case, the constitutions are very simple: proprietorship firm, private limited, LLP, public limited. Okay. So in societies also, we cannot say only society. In societies also, there could be many variants. So what we have learned, alike basically the constitutions that we have in normal business, in societies, not every society will have the same structure basically. Oh, okay. What happens is, now when you have to give loan to these people, okay, they are very averse. अरे EMI कौन भरेगा? मतलब we have to very अरे rate of interest, ये तो कुछ ना कुछ तो all banks, अरे we have not heard of, because members have different opinions and different members having different opinions, and then they are asking various questions. Okay. So what we do in these scenarios is, the main office bearers, okay, we take them as co-borrowers to the loan. Okay. We explain them the product. We explain them, because then we have little less people to talk to, and we know that they are the window to the rest of the members. So whatever questions they have gotten from the society members, we ask them to collate them, and then we explain them one by one what are the mitigants in this. Most importantly,
they start talking about subsidy, Pradhan Mantri Awas Yojana. What is the Yojana? How will we get it? What what do we claim? How do we claim? What will be your loan? What happens? The most important question: what happens if we get the subsidy? Then what do we do with that subsidy? Do we return them? Will there be pre-closure charges? You know, what happens if we give them the loan? What will be the tenure left? All this question. So we answer all those questions. Yes, we take whenever that up to 18,000 per kilowatt thing, we accept the subsidies as a pre-closure. We don't charge them anything. Okay, so they are relaxed. Okay, so the tenure comes down by at least 1 year, 1.5 year, because I would assume that a project cost would be roughly around 60, 70,000 rupees per kilowatt. 18,000 brings down the tenure by at least 1.5 year. So they are clear that there will be no foreclosures on this. They might not understand or meet the criteria for subsidies or net metering sometimes. So what happens if the subsidy doesn't come and all these things. So we have enabled EPCs. We have explained. While I hope that you all know which are the societies which get subsidies and what is the procedure for getting the subsidies and everything. But still, if they have any questions, since we have done so many cases and we are a platform where we need to, so we have a knowledge bank. We help the EPCs and the society office bearers, explaining them how they can get the subsidy and incentives. Most importantly, upfront capital required. So what happens is they start worrying, अच्छा pre-EMI भरना है, starting day one से भरना है पैसा. What will be the initial down payment? What are the pre-EMI? When would the main EMI start? Okay, so they start asking all these questions. They talk about, अरे plant बंद हो जाएगा, society का bill आएगा, तो what will we do about paying the EMIs? And these are normal questions. I'm not saying that you must have not heard of this, but we have seen that in societies, because there is lack of leadership or multiple stakeholders. I would not say lack of leadership, but multiple stakeholders. Every time these queries will come and niggling you, basically. They will try and disturb you. Okay, what is happening in this? So we explain them the EMI options, what happens to the loan, the term loan, the initial down payment, what they want to do it, 15%, 20%, 25%. Okay, we explain them what happens when the loan is, when the loan is going to go for 3 years, 4 years. We explain them how it will reduce. It is a reducing balance. We share with them more and more details. It's not that they are not aware, but since all these office bearers are doing honorary work, they want to keep on documenting each and everything. They might have taken in their personal many loans, but when it comes to society work, they want everything crystal clear. Okay, they will, they will keep on asking, "अरे, rate of interest बढ़ गया तो क्या होगा? What will happen?" They will ask you all this question, but they will ask you, अच्छा जो EPC लगा रहा है, okay, सोसाइटी है ना, so what will, अरे आप लोग तो इकोसिस्टम में हो, आप तो will this system work? आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है क्या? कोई टेस्टिमोनियल है क्या? अच्छा, हमें कोई विजिट करना है कोई सोसाइटी में जाके, वहां पे जाके हमको उनको पूछने का है, तो हमें क्रॉस चेक करने का क्या रेफरेंस चाहिए क्या? So even after you guys giving the comfort, they will keep asking us these questions to validate, and we help them basically. We also tell them, yes, sir, we have done this. This is, you can contact this is the secretary. You can speak to the society. What has happened, everything. So after doing all these cases, you learned that these are the major ones. One last one is coming up. Legal and documentation, title clarity. Acha, kiska roof hoga? Sometimes what happens in normal society which is registered, that is not a problem. Sometimes there would be a flat on the rooftop with a terrace. Arey, mere terrace ki idhar se ye wo everything. We always want to give them the clarity that title is very important from the aspect that
it should not that someone should not then raise question. So we ask societies sometimes, where we feel if there is any ambiguity, to take NOCs from relevant people, or from if the special general body meeting, there has been consent of all the society members. Later on, there should not be only any other problems. Last but not the least, okay, uh, there are many things where PPAs and lease models have started. Open access, especially in Maharashtra, has not started 100 kilowatt and above, but we have started getting cases where societies are getting into PPAs or lease models, which we have started looking for bigger societies, especially 100 kilowatt and above. And we have tried to structure deals for that. Um, all in all, I would want to say is, after doing this number of cases, we are now very confident that we will be able to address the challenges that uh, any society might get for putting up the installation, the plant installation, putting up the plant. फायदा ये है बेसिकली सोसाइटीज के लिए कि दे डोंट हैव टू वरी नाउ कि उनको लोन नहीं मिलता. If because this is for a specific purpose, we are not giving this loan for any other. This is a loan. This is a loan where we are giving them to reduce the electricity cost, and it is a very niche product. And we being in this business, we have been successfully able to execute, and because of our understanding of this product, how this is being done, and now we are getting many cases month on month, and we thought, okay, we will, through this forum, if you have any questions related to financing challenges that you are facing in housing society, then this is the right time, because we want to now go full out in this profile. So here we are. This is from my side. Now you may ask questions, anything related to societies. सबसे पहले एक बार मैं किरण जी से, I think किरण जी बीच में, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था बीच में, so we can start with you only. यहाँ से करो. Yeah. Good evening, Hatik ji. Thanks for the presentation. Good insight. So my question was related to a society. First thing I saw in your flyer was residential societies, the loan is only up to 10 lakhs. That is what put me back, because I'm doing, there is one PPA model, as you rightly said. It is for about 250 kilowatts, and they would go for a PPA model. So how do we work out this? तो अगर आप स्लाइड देखोगे ना, so can you hear me? I'm not able to hear. Yeah. हाँ, so अगर मैं आपको बताऊं, we classify societies under C&I, commercial. Okay. Our classification of societies under commercial. Okay, so you can go up to 5 crore loan. We have not got a society case up to 5 crore now. The maximum we have got around is 350 kilowatt or 500 kilowatt case. Okay. So, I can put up this case with Keshav. Tomorrow, I think they are meeting. So, we can discuss this as a PPA model. Yes. Okay, that answers my question. And this PPA will be signed between, will it be a tri-party or it will be between Aerem and the society? So there are two kind of PPAs, sir.
Okay. The first is where you want to take up the whole Malai. Okay. Okay, where you want to take up the Yeah. whole Malai. And the second PBA model is where you want to share the Malai. Yes. No, definitely sharing is caring, sir. Yes. Okay. Thank you for that, sir. So in first model now, where the EPC wants the full Malai. Okay. Okay. Uh, the there our main borrower is the EPC. We get into tripartite agreements in both Okay. the cases. Okay. Okay. And in second, where you are sharing the Malai, okay, we are putting up the Yeah. proposal and we will be subcontracting to you because generation Okay. we are not installers. आपको पता है ना सबको. We are not into installing. Yeah, yeah, I understand. Yeah. Okay. So you will be Yeah. the installer. You will take care of the guarantee of the generation and Yeah. you will get the uh, AMC charges. वो आपका ही है. Okay. The Okay. malai that I am sharing, the sharing malai that I am saying is from the extra generation that will happen. Yeah, correct. I understand that. So, let us say, suppose it is 7.5 rupees of PPA rate for 7 years. It will be for 7 years max? Depends, maximum 7 years, sir. Okay. So, you would share out some percentage out of that PPA, out of the 7.5 to some agreed paise to us. Is it so? So, for example, एक एग्जांपल लेता हूँ 100 किलो. So sharing malai वाला एग्जांपल 100 किलोवाट Uh, इज द मिनिमम दैट वी वुड एक्सपेक्ट. बराबर है. In yeah, yeah, all 12 months electricity generation will not happen the same, right? correct. So in some months it will go up to 110, 120, 130, and in some months it might go up to, so say out of 12 Yeah, months, 8 months it will be more 100 plus, okay, yeah. and in 4 months it will be 100 minus, for example. Yeah, whatever. See, I am already doing I have a PPA in place for 500 kilowatts with Raymond's. So I understand that PPA terminology. Only thing I was asking you about the sharing part. So We do are you mean to sharing, say suppose so we will share, sir. suppose PPA is at 7.5. So would you share some of that 7.5 to us as a sharing or this thing or how it goes? Absolutely, sir. Extra generation. See, the customer pays per unit. Okay. Correct. You might have a customer at 7.5, you might have a customer at 8, you might have a customer at Whatever 6. is the accurate. Yeah. So there will be a minimum units that we will agree upon. Okay. I understand. Clear? Yeah, I'm clear on that. Thanks. Thanks for the clarification. Any other questions? Sandeep ji, Suyog ji, Vishwa ji, any guys, they just make this. Yeah, one more thing. Yeah, I mean, just not a question, but this is a good initiative because now a lot of societies are coming up with either capex mode or PPA mode and deferred finance mode also. So I would like to share one experience here. Is one of the societies has asked me for a deferred capex mode. So is there some sort of a model in the deferred capex or something like that with you? So when I say deferred capex, uh, we call it lease model, sir. Lease model, yeah, okay. Okay. So that So would be there with you. हाँ, so उसमें क्या होता है? How is it different from the PPAs? It's like just you have taken a car on lease. Correct, I understand. Okay, and after the tenure gets over, one rupee में the asset gets transferred.
Correct. Correct. That is available, sir, with us. Okay. Okay. Thanks. Hello. Yes. Yeah, I just wanted to ask that this scheme is only for the housing society, or it will be available for the commercial complex as well? Commercial and industrial cases. Yeah. Yeah, Yeah. because commercial complex are having common electricity consumption and all, but they will not get the subsidy parts. Commercial anyway don't get subsidy. उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी सर। प्रधानमंत्री 18,000 रुपये वाली बात कर रहे हो ना, 18,000 वाली। But our finance is available to them, but the subsidy will not be applicable to them. हाँ, चलेगा ना सर। सी देखिए, बिजनेस मॉडल है सर, इट इज अबाउट द कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सब्सिडी अगर उनको हाँ सॉरी, हाँ, उनको क्लैरिफिकेशन कर दो कि कस्टमर्स C&I को सब्सिडी मिलती ही नहीं है। हाँ नहीं वो नहीं किरण जी, मैं यू आर राइट, मैं उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो बता रहा था कि PPA model, lease model is not restricted to societies. Yeah. It is available for everybody. Everyone, correct. So that is a good thing. Yeah. Thanks. Good evening. Basically, there are few societies, those are not registered and they don't have any funds, sinking funds. And I've got inquiry of about 3-4 such kind of societies wherein they are in need of loans, but due to, as I said, they are not registered and don't have sinking fund. So how do we go about it? तो इजी वाला पहले ले लेता हूँ सर। सिंकिंग फंड को है ना, is for specific purpose. They have to mention in their bylaws. Not every society can use sinking fund because that is for repairs and other maintenance stuff. अगर उनके बाइलॉज में अगर लिखा है कि सिंकिंग फंड, मतलब आप, मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम सोसाइटीज में ना सर सिंकिंग फंड को कोई हाथ नहीं लगाता। ओके। दूसरी चीज, जहां पे आप बोल रहे हो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है सर, ओके, मुझे ना उसका रीजन जानना होगा कि रजिस्टर्ड सोसाइटी क्यों नहीं हुआ। कुछ कन्वेंस का है? काफी जगह पे कैसा है कि बिल्डर ने अभी तक वो उनको अभी तक वो हैंडओवर ही नहीं किया है। इट्स बीन अ ईयर और सो एंड बिल्डर ने अभी तक हैंडओवर किया नहीं है, इसलिए वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर मुझे दिक्कत कहाँ पता है कि मैं एप्लीकेंट किसको बनाऊं। Yeah, that is the problem, and I have around 3-4 such inquiries currently. तो जो वहाँ पे ऑलरेडी जो सोसाइटी में जो ये है चेयरमैन वगैरह जो बने हुए हैं, सो इन दैट केस कोई तो एक कंपनी ने कहा था कि उनको हम लोग को एप्लीकेट करके कर सकते हैं, काइंड ऑफ। सो आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ लोन कैसे होता है। सोसाइटी में लोन होता कैसे है, हम लोग है ना सोसाइटी को मेन एप्लीकेंट बना देते हैं, ओके, बिकॉज EMI उनके अकाउंट से आनी है, राइट, सब्सिडी सोसाइटी को ही मिलने वाला है, राइट, ओके, टेरेस भी सोसाइटी का ही है, किसी इंडिविजुअल मेंबर का तो है नहीं, बराबर। तो हम जो है ना मेन एप्लीकेंट है ना सोसाइटी को बनाते हैं, और को बोरोवर में है ना जो उनके ऑफिस बैरर्स है ना, चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर, ये 3 लोगों को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये लोग की कमिटी फॉर्म कैसे बनाए, इसका कमिटी कैसे बनाए रहे। हाँ, तो इसके थोड़े बेसिक क्वेश्चंस में जाना पड़ेगा सर कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि सोसाइटीज नहीं बनने का कारण 2-3 होता है सर। जो सबसे मदर प्रॉब्लम बता देता हूँ, कन्वेंस नहीं हुआ होता है, ओके। नई नई बिल्डिंग बनी है 3-4 साल पहले, लेकिन सोसाइटी में ना OC आया नहीं है और कुछ ना कुछ कांड हो गया है, और वो बिल्डर ही अपने हाथ से सब कुछ कर रहा है, या ही हैज नॉट बीन एबल टू सेल ऑल द फ्लैट्स। बिल्डर क्या करता है, जो सपोजिंग 50 फ्लैट की सोसाइटी है, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, और 12 फ्लैट रह गए जो पीछे नाला की साइड पे आ रहे हैं बेसिकली, तो वो छोड़ता नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट रखता है उसके अंदर बेसिकली,
बराबर। तो अगर ये डिस्टर्ब्ड वाला चीज है ना सर, उसमें देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टर्ब्ड है ये लोग बेसिकली। कोई सोसाइटी हो हम्म जो 30 ईयर से एग्जिस्टेंस में है, ओके फॉर एग्जाम्पल, हम्म और उसका सब कुछ सही है और रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, तो भी एक बार हम्म, अपन देख सकते हैं कि भाई इसमें तो कोई मतलब वो क्या हो गया। लेकिन अगर फ्रेश कोई इश्यू चल रहा है कुछ बेसिकली जो अभी तक राइट। सुलझा नहीं, तब दिक्कत होगी। पुराना डिटेल्स में सोसाइटी जाना है, पड़ेगा, दादर राइट। का एक सोसाइटी आ गया आपके, मतलब लाइक मुंबई में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ फ्रॉम मुंबई, पर है हमारे मुंबई में ना बहुत सारी पुरानी सोसाइटीज कन्वेंस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? बट वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स से है सोसाइटीज, एंड अच्छी चल राइट। रही है, बड़ी बड़ी नहीं, सोसाइटी। ऐसा भी एक आया था जो 30 साल से सोसाइटी है, बट सोसाइटी अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ है। वो हाँ अपार्टमेंट करे, सोसाइटी करे, उनमें वही झगड़ा है सोसाइटी मेंबर्स में, तो अभी तक उन्होंने सोसाइटी फॉर्म नहीं किया है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो उसके ना रूट में जाना पड़ेगा बेसिकली, कि कितना ओके सीवियर है वो चीज। ओके। सर और एक मेरा क्वेश्चन है। अगर हम कई जगह देखो सोसाइटी रहता है, लेकिन उनका जो कॉमन का लाइट बिल वगैरह रहता है वो सेक्रेटरी के नाम पे रहता है। तो किसके वो नाम पे केस रहता है? में अगर सेक्रेटरी के, तो नाम चेंज करा दो सर उसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम चेंज कराना कितना बड़ा काम है? वो वो इसमें सोसाइटी के नाम पे करना पड़ेगा। इजी है ना सर, सब्सिडी सोसाइटी में आएगी, वो सेक्रेटरी को नहीं आने वाली है। अगर वो नाम हाँ मैच नहीं बहुत किया तो जगह सब्सिडी नहीं आएगी। अच्छा बराबर। सर थोड़ा है ना, सोसाइटी में सी एंड आई जैसा इजी बिजनेस नहीं है, ये लोग को थोड़ा सिखाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। सर ये सोसाइटी के लिए सब अपना इंटरेस्ट रेट कितना होगा? अराउंड सर 10 से 11% रिड्यूसिंग आता है, 10 to 11%, 25% का कैश कोलेटरल रख के, मार्जिन मार्जिन मनी जो बोलते हैं। अच्छा, उनको लोन मतलब 75% ही मिलेगा? 75 to 80% डिपेंडिंग अपॉन के कॉस्ट कैसा है सर। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को वो लोग प्रेशर डालते हैं बेसिकली, कि ये जो, क्योंकि क्या है ना सर, फैब्रिकेशन का पैसा नहीं देते हैं हम लोग बेसिकली, अपने को तो वो प्लांट का पैसा है ना, जो रूफटॉप इंस्टॉलेशन का है। लेकिन एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है सोसाइटी में, बिकॉज आप सबको पता है कि रूफटॉप इजीली मैनेजेबल नहीं है बेसिकली। वो बोलेगा मेरा, अरे मेरा जो है टेरेस का जो, क्या बोलते हैं, व्यू था वो ये हो गया वो हो गया, फिर कहीं पे भी बिठाने का बेसिकली बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन यू नो केस टू केस, एक अंदाजा अगर मैं आपको देखूंगा तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम 20% सर। और एक जैसे था देखो, आप बोल रहे थे 25 तक रखना है। सोसाइटी का फाइनेंशियल करने का मेन पर्पज तो रहता है कि सोसाइटी ऐसा नहीं है। अगर वो कैश कोलेट्रल अभी 25 तक रखना है, वो भी उनके पास नहीं है, तो वो एडजस्ट करने के लिए कुछ हमारे पास ऐसा कुछ दूसरा प्लान है। आप पूछ रहे सर क्वेश्चन मुझे, या वो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करोगे सर? मैं ना थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ क्वेश्चन। देखो सर, अभी 1 CR का कोर्स है, 1 CR का कोर्स भी है मान लो, फॉर एग्जाम्पल उसमें 25 का कैश कोलेट्रल रखना है आपके पास, है ना? मतलब 25 लाख हाँ ऐसे ही है ओके, ना? यस बराबर, यस। अगर मेरे पास इंक्वायरी, फाइनेंसिंग का इंक्वायरी इसलिए आया है कि सोसाइटी के पास पैसा ही है नहीं। अरे वो आपके पास रखने के लिए 25 लाख कहाँ से लाएंगे? 25 लाख कहाँ से लाएंगे वो पैसा, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ वो उसमें कुछ दूसरा ऑप्शन है क्या? सर 1 CR का केस मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर 5-5 हजार रुपया भी लेंगे ना, 10-10 हजार रुपया पहले एक अपफ्रंट कॉस्ट निकालेंगे, नॉर्मली मैंने देखा है कि तो वो पैसा आ जाता है सर। मुझे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक मार्जिन फंडिंग का। So I have just got one question here. हाँ, It is like this: when you have said 7 year, 10 year for C&I and 9% reducing. 9% रिड्यूसिंग से शुरू होता है सर। शुरू होता है अच्छा। ऑफकोर्स। नहीं, because see, you have to calculate a PPA, arrive at a PPA rate. I will have to calculate it along with either with you or
suppose I have to build up this thing, then I should understand what this 9% reducing will be. Then only I can build up that cost here. हाँ हाँ, तो वो सर, सो जब भी आप कोई रेट फिक्स अप करोगे, कुछ वो करके आओगे, सो मैंने आपको बताया ना कि ये हर केस टू केस अलग अलग होगा. देयर कैन नॉट बी अ वन फिक्स प्रोडक्ट ऑल. Yeah, okay, so I'll just tomorrow I'm going for a meeting with Toyota. Okay, now Toyota is a very good company. So I mean, what would be the this thing? Because they want to go for a OPEX model only. लीज मॉडल बोल रहे हो ना आप? OPEX, OPEX. PPA, हाँ, OPEX or लीज. yeah. तो मैंने आपको बताया ना, आप 11% बोलो ना उसको. इनफैक्ट लीज मॉडल तो है ना, अगर अगर अच्छी कंपनी है लीज मॉडल, इनफैक्ट ऑल गुड कंपनीज, आपको तो पता ही है सब लोगों को के मल्टीनेशनल्स एंड एवरीबॉडी वुड वांट टू गो फॉर लीज मॉडल ओनली. दे बिलीव इन लीज मॉडल ओनली. Okay, so I will discuss it separately with you. That is Sure. one thing. And again, now I've got entry into Club Mahindra also. सर एक सेकंड ना, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं क्या? मैं यहाँ पे ना, सब लोग ने चैट बॉक्स में डाला है. प्लीज कंसीडर अ सिंपल केस Okay. लोन ऑफ इट्स ओन Okay. प्लान एंड कंजर्वेशन से लोन ऑफ 12 lakh. काइंडली स्टेट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर एटसेट्रा. ओके, सो अगर मुझे इजी वाला पहला ना, तो जो टेन्योर होता है, अगर वो कैपेक्स मॉडल में जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो टेन्योर इज अप टू 3 to 4 years. ओके, इंटरेस्ट रेट में आपको ऑलरेडी बचा चुका हूँ, 11% के आसपास होगा. एंड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, बोरोवर, को बोरोवर के केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफ कोर्स सोसाइटी का तो पैन कार्ड होगा, उसके बाईलॉज होंगे, उनका लास्ट 12 months का बैंकिंग, 12 months का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रपोजल, 2 साल का बैलेंस शीट, और जो को बोरोवर्स हैं उनका केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड. दिस इज द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर. सर एक Sir, I request to put the list of documents in the On chat this- box. अच्छा, आई विल पुट इट सर, आई विल पुट इट इन अ वाइल. ये चल रहा है ना, लाइव है. आई विल पुट इट इन अ वाइल. श्योर. सर 100% लोन आने के लिए कुछ चांसेस है सोसाइटी को? नहीं सर, नो नो. सम बैंक्स आर डूइंग सर 100% लोन. सर कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकती है, उनके बैंक अकाउंट्स उनके साथ होते हैं. उनके Nationalized bank is doing. They are giving 100% loan for solar for society, and they are giving a reducing 8.1 rate of interest because they are having a corpus fund of some 1.2 crore to them in their bank. So on that basis, they are giving it. Some yeah, for that actually they require the 100% loan. Some societies are asking we want 100% loan. So is there any chance? Some No, sir. We don't have that product. We don't have that offering. SBI, of course, is the lead banker, National Bank. Of course, they will have, और हम तो बैंक से ही लेके लोन बांटते हैं. We are NBFCs. So, सर वो रेट मैच नहीं कर पाएंगे सर. okay. Sir, good afternoon. Hello. हाँ, गुड आफ्टरनून. हाँ sir, आपका your session was really nice, cleared a lot of doubt. So मुझे I have one doubt. What is the minimum margin amount which you are expecting? Let us say 20%. once you have 20%. 20%. अच्छा. So can you negotiate on that? Can be it 15 to 20 वगैरह हो सकता है या कैसे? सर मैं 25 से 20 पे ऑलरेडी आ गया. आपने तो अभी तक डील भी नहीं दी और आपने डिस्कस कर लिया. मिनिमम नहीं sir, 20%. sir, just I have societies in pipeline ranging between 70 to 100 kilowatt. तो वही पे दे आर आस्किंग, अगर अभी आपको पता है सोसाइटी में पैसा भी होता है पर अगर मिलता है फाइनेंस मिलता है तो क्यों नहीं बाहर से लेकर के. तो दैट्स व्हाट आई एम ये. अच्छा, सर और उनको सेकंड थिंग सर बोलिए उनको सर. जीएसटी वापस मिल जाता है ना, 13.8%. जीएसटी इनपुट वापस मिल जाता है कि नहीं? हाँ हाँ, अगर हाँ इफ दे आर क्वालिफाइंग फॉर दैट, बिकॉज वो मुझे मेंटेनेंस का कुछ है ना, उनका क्लॉज है कि अगर मेंटेनेंस अमाउंट इज मोर देन दैट देन दे आर एलिजिबल, दे आर एप्लीकेबल टू जीएसटी. आई थिंक सम लॉ, कुछ जीएसटी का लॉ है. अच्छा, सो तो मुझे नहीं पता बोलिए. एसबीआई इंक्लूडिंग जीएसटी करता है, मुझे नहीं पता है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है.
सो एक्चुअली अगर आप मुझे पूछोगे कि 100 रुपीज का प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 13.8 का तो क्रेडिट उसको वापस मिल जाएगा जैसे ही आप उसको टैक्स इनवॉइस रेज करोगे। बराबर है। तो एक्चुअली उसको तो 6% ही आया ना सर। बराबर है। अच्छा, तो यानी अगर आप 100 रुपए का प्रोजेक्ट हो तो आप 80 रुपए फाइनेंस कर दोगे, बराबर है। यस इंक्लूडिंग, हाँ, सो दैट इज द एडवांटेज विद अस, इंक्लूडिंग जीएसटी है हमारा जो है। आई डोंट नो अबाउट अच्छा। एसबीआई, मुझे वो नहीं पता है बिकॉज मैं वो हम्म, रेट पर मुझे मुझे उनका वो नहीं पता है, बट आवर्स हम्म, इज इंक्लूडिंग जीएसटी। द प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट वी कंसिडर इज इंक्लूडिंग हम्म। जीएसटी। अच्छा अच्छा सर, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है, जैसे एज ए थंब रूल, जैसे इफ यू पीच टू कस्टमर, सो लेटेस्ट से उसका लाख रुपया महीने का एनर्जी बिल आता है, so considering 3 years EMI, can we say that the cost of the EMI will be half of the energy bill, यानी 50,000 रुपये तो EMI आ सकता है, is it? और नहीं सर, ईएमआई तो है ना, हाँ, सो ईएमआई वुड बी एटलीस्ट 80% सर ऑफ द एटी एनर्जी परसेंट कॉस्ट। हाँ, अच्छा, 80% ऑफ द एनर्जी बिल, अच्छा हाँ, अच्छा। मैंने जो मैक्सिमम लोन्स किए ना वहां पे मैंने देखा है कि एटलीस्ट 80% रहता है, क्योंकि टर्म लोन मतलब इट्स अ 3 ईयर लोन फॉर, अगर बड़ा लोन होता ना 10 ईयर्स या 15 ईयर्स तो बहुत इजी हो जाता था, पर अच्छा लोग 10 ईयर कम है ना, इसके लिए जो हाँ, ईएमआई एटलीस्ट 80-90% होगा। अच्छा अच्छा, वी कैन से दैट 89%, ओके ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट सर, प्लीज शेयर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन इन एरएम टू टेक दिस फॉरवर्ड। सर आप हमें लोकेशन दे दोगे आपका? हेलो। नागराज जी, नागराज जी, आपका लोकेशन शेयर लिख दोगे क्या? आई एम ऑल्सो। Tirupur, Tamil Nadu, and we also operate from Bangalore, Karnataka. श्योर, तो हाँ, चैट पे डाल देना एक बार। हाँ, शशि का नंबर Sir, है। one more question, sir. You were telling that you are financing including GST, and one of the persons was telling that they can't take GST input tax credit for solar plant installation. Is that correct? इन सोसाइटी केस और इन अदर केस बेसिकली सर। In C&I cases. सी एंड आई केसेस में देर आर सर्टन सर, स्टेट गवर्नमेंट्स ना, दे गिव सर्टन सब्सिडीज टू सर्टन इंडस्ट्रीज। ओके, Okay. वहां पे है ना उनको जीएसटी का इनपुट लेने को मना, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गॉट दैट अदर सब्सिडीज बेसिकली। Okay. Okay. सो वो बहुत फ्यू है सर, दे आर हैंडफुल ऑफ देम। जैसे मैं आपको बताऊं ना, राइस मिल या फिर समटाइम्स कॉटन स्पिनिंग मिल्स, मतलब सम where there is very niche, more towards agro products or something like that, where they get Okay. कोल्ड स्टोरेज में है, कुछ कुछ जगह पे पैन इंडिया में, कुछ कहाँ कोई कोई स्टेट में कोल्ड स्टोरेज में, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू एग्री सर, एग्री बिजनेसेस। Okay. So business, it depends on the industry to which they belong. Is that right? yes sir, because they are Okay. getting other type of subsidies from the government। Government. Okay. सर ये जैसे बेसिकली अपने को सोसाइटी को अगर कन्विंस करना है लोन के लिए, तो उनको ये कन्विंस के साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा ना कि 20% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी एज अ कैश कोलेटरल, तो फिर रिफंडेबल होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स रिफंडेबल होगी सर, जैसे ही टेन्योर खत्म हो जाएगा दैट विल बी रिटर्न बैक, वो फोर पार्ट टू सिक्स होगा। परसेंट 4 to 6% बढ़कर उनको मिल जाएगा वो 20%। यस एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और यहाँ तक के कन्विंस करने के लिए आपका कुछ साथ रहेगा हमारे साथ, जो हंड्रेड सोसाइटी परसेंट को कन्विंस हंड्रेड नहीं है? परसेंट सर। हाँ। जैसे पीयूष ने बताया कि हम लोग पैन इंडिया प्रेजेंस है सर, हम लोग मेरे इन एवरी स्टेट वी आर प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज वी आर देयर। तो हम लोग वी विल बी एबल टू असिस्ट यू सर, मतलब हम आपके साथ साथ में चल सकते हैं, नो वरीज। वी आर 50 ऑफ अस, वी आर राइट नाउ वर्किंग फ्रॉम ऑल मेजर स्टेट्स। हम लोग साउथ से लेके नॉर्थ तक वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर। Hardik sir, one question. अच्छा। This is sorry, related to the subsidy. Suppose a housing society goes for a PPA or a loan. Loan is okay. I mean, loan is a type of finance. But if it goes for a PPA, is it subsidy will be available for them? It will not be available.
करेक्ट। उसने सर जैसे उसने यूनिट परचेज किया है ना सर। ओके, सो दैट अदर solution would be deferred capex would be okay for them then? डिफर्ड कैपेक्स में लीज में भी नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा, लीज में मिलना मुमकिन है सर, दे हैव गॉट द मनी फ्रॉम समवेयर, सो सर उधर बोरो करके नहीं दिखता है सर, उसमें हायर परचेज करके दिखता है। अच्छा, ओके, सो लोन के केस में मिल सकता है, नॉट ऑन पीपीए, करेक्ट? ओके, थैंक्स फॉर। वैसे देखा जाए तो 20% जो रिफंडेबल मिल जाएगा, वो देखा जाए तो 100% की फाइनेंसिंग हो गया ना डायरेक्टली सोसाइटी को। हाँ, 94% सर, 94%। 94%। अच्छा, सोसाइटी लोन्स के लिए हमें सारे मेंबर्स के एनओसी चाहिए क्या? नो 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 सर, मुझे सिर्फ उनका जो स्पेशल जनरल बॉडी में जो पास होता है ना कि वी ऑल हाँ, मेंबर्स अग्री, एजीएम तक भी रुकने का जरूरत नहीं है। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी इनकी एक तो रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन चलेगा। ओके। यस। तो सर जैसे हमने जैसे कोई सोसाइटी को अप्रोच किया सर, मार्केटिंग के लिए, भाई सोलार लगा लीजिए, ये सब चीज अच्छी है, सारे बेनिफिट्स भी बताए, तो वो बोलते कि हमारा एजीएम होगा तब बात करेंगे। 1 साल निकल जाता है, 1.5 साल निकल जाता है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी वो लोग फैसला ले ले, उसके लिए क्या ट्रिक्स है आपके? उसको बोलो स्पेशल मैनेजिंग कमिटी मेंबर। एजीएम पूरे साल में एक बार आता है, सही सही एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए सही सही। स्पेशल स्पेशल जनरल जनरल मीटिंग। बॉडी, हाँ हाँ, एसबीजीएम सर, एसबीजी। स्पेशल जनरल बॉडी एसजीबीएम, हाँ स्पेशल हाँ। जनरल बॉडी मीटिंग सर। ये मीटिंग। कभी भी बुला सकती है, 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है सर मेंबर्स लोग को। और वरना ये भी 50 days। उसके लिए भी सर, ये लोग मतलब महीना 2 महीना निकाल लेते हैं, बोले ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं, अभी ये वहां गया, ये नहीं वहां वो गया है, तो सर उसके लिए मैं थोड़ा आपको सा बता रहा जल्दी हूँ करनी। हाँ। सर, ये लोग क्या होता है सब ऑनररी काम करते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, इनमें अपने को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। देखो समझो बात को सर, वो ऑनररी काम कर रहा है सामने वाला बंदा, उसका जेब से कुछ नहीं जा रहा है। सही उसको 4 जन 4 सवाल पूछेगा, उसका दिमाग में वो फ्री होना चाहिए, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। तो पहले जो मैंने जो समझा है इतना बेसिकली, तीनों जन इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन में, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। उसमें से जो भी सेक्रेटरी ट्रेजरर मुझे लगते हैं कि वो जो इनिशियल क्वेरीज जो रहते हैं ना, फास्ट फास्ट बेसिकली, सही वो सही। उनके साथ आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड फिर चेयरमैन को, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी जगह चेयरमैन भी होता है एक्टिव, बट आई एम जस्ट सेइंग के व्हाट आई हैव सीन इज के दे आर डूइंग ऑनररी जॉब्स। सो वो लोग उतना अपने को धक्का, मतलब धक्का नहीं बोल सकते आप, वो लोग डिले करते हो ये सब डिसीजंस। सही बात। बट अवेयरनेस आ गया है सर फॉर एवरी वन ऑफ यू। देर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस, देर इज लॉट ऑफ दिस थिंग। यानी अवेयरनेस से तो अच्छा है कि जहाँ पर मुंबई में सोसाइटी के पास जगह भी नहीं, तो वो भी लोग दूसरा रास्ता तलाश करेंगे भाई, सो ये सोलार कैसे ना कैसे हमारे पास लग जाए। नहीं, अभी अभी काफी अवेयरनेस आ गई इन टर्म्स ऑफ सोलर। तो अवेयरनेस का कुछ नहीं है, ओनली दे वुड वांट टू वैलिडेट, मतलब बस ये प्रूव करने के लिए कि भाई बस ये टेक्नोलॉजी चलती है। तो एक दो विजिट सेक्रेटरी का मेन पर्सन लोग को करना बहुत जरूरी है सर। Sir, what kind of societies are accepted nowadays? They are getting registered under MAX Act, Mutually Aided Cooperative Societies Act. I'm सर Naresh from Arvind Recon from Hyderabad. ओके Yeah, societies registration, how are you accepting generally? सर, so आई एम अ बैंकर, ओके, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल दैट, बट आप एक वन वे टू अंडरस्टैंड कि वी कैन फंड इट और नॉट, विल दे गेट सब्सिडी? Yes, they'll get the subsidy. Okay, so then we can prepare a case. Okay, we might write to that people and then we can start funding over there. Initially, before there used to be cases like housing societies. Registration will be done under housing societies. Now the governments are imposing them to register under MAX Act, a Mutually Aided Cooperative Society Act. So there must be some provision, some draft, why they have changed this thing. There must be some change, na? What is that change? And most importantly, we have, I'm saying that the first question that we need to answer is basically, will they get subsidy under this if this is kind of society? नेट मीटरिंग होगा इनका। Right. अब
आप चेक करो इसका नेट मीटरिंग होगा क्या? नेट मीटरिंग होगा सर, होगा। सब्सिडी मिलेगा सर? वी डोंट नो, लाइक वी हैव टू चेक व्हेन वी अप्लाई, विल नो। हाँ, एक बार आप चेक कर लो ना, सब्सिडी मिल रहा है क्या वो चेक कर लो सर। ओके। ओके। दूसरा चीज है ना सर, उसका अगर बाईलॉज का कॉपी है तो वो हाथ में ले लो, समझ लेते हैं ना कि उनके ठीक है, बाईलॉज वी मेरे को वी पता हैव चल द जाएगा ना बाइनस कॉपी कि एंड वी शेयर इट टू यू। यस, बाईलॉज कॉपी और सब्सिडी मिलता है कि नहीं, ये दो चीज कंफर्म करो ना सर। और थोड़ा प्रोफाइल कितने साल से बन रहे, मतलब पहले वो सोसाइटीज थी और अब ये बन गई है, तो क्या डिफरेंस है, इफ यू कैन नहीं गेट नहीं दैट। नहीं, अभी ये सोसाइटी का नहीं है, दूसरा। इट यूज्ड टू बी यूजुअली हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट, नाउ इट इज म्यूचुअली एडेड प्रॉपर्टी सोसाइटी। विल गेट बैक टू ऑन बोथ सर, एनीवे आई विल गिव द डिटेल्स। यस यस, एक बार समझ लेते हैं सर। यस। या थैंक यू। Any other question, guys? अगर आप लोग, मैं हम लोग का और 5-10 मिनट्स लेना चाहता हूँ। आई वुड वांट टू कॉल पीयूष वंस अगेन। मुझे आपको है ना एक स्पेसिफिक चीज बतानी है। Sure. Thanks, Hardik. So, as I said in the initial presentation, हमारे EPC partners को empower करने के लिए हम लोग continuously effort कर रहे हैं, and as part of that, recently we have introduced a new feature. ये feature है quick proposal. So what it is trying to do is, as soon as आपका lead engagement start होता है, the time your lead engagement journey starts, like you just got the lead information from somewhere, or you want to create an impression, first impression on the lead. So typically the way it works is, next slide. Next slide. So the way it works is, video, okay. Just give me a second. So the way it works is that as soon as you so just watch this video, hopefully you can hear the voice, और इसके बाद you hear the sound, उसके बाद मैं आपको quickly explain करता हूँ. So this is a walkthrough of the new feature, newly launched feature. So this is available on the app as well as on the website. And what it is trying to do is that as soon as you engage with your lead, जैसे lead आया, उसके बाद immediately आप within a minute you can create a quick proposal. So quick proposal is a very initial level idea for a customer to understand what the solar will bring to him. So what it does is, maybe just watch this video, then I'll just explain the benefit of it. Hi everyone. We are happy to proposal. This feature is designed to help. Hi everyone. We are happy to introduce a new feature on the Aerem partner portal, which is the quick proposal. This feature is designed to help EPCs create solar proposals faster and more efficiently right from their dashboard. To get started, you can click on the proposals on the navigation bar. You will see two options here, quick proposal and the detailed one. Before using quick proposal, you'll need to complete a simple branding setup where you need to upload your company logo, contact details, a short about us, and some images of your past solar installations. Now this branding will automatically reflect on every proposal that you generate. Once the setup is complete, you can create a proposal in just 2 easy steps. You can start by selecting the type of the customer, whether it is residential or commercial and industrial. Once you have selected the type, you just need to enter the simple details about the customer and then proceed with entering the site details. All the details, you just click on submit button and your proposal is ready. Now you're all set to see a list of all the proposals that you have created. You can just click on the preview icon to preview the proposal. You can click on the edit icon to edit the form. You can simply download the proposal from here. You can also delete it from here. I'll click on the preview icon to see how the PDF is created. So each proposal include key highlights like system size, system price, grid offset, and the payback period, and other required fields. With quick proposal, you can generate solar proposals that are fast, mobile friendly, and branded to your business. So जैसा कि आपने देखा, so this quick proposal is a quite empowering tool. So as I said कि lead जैसे ही आपके पास आई, within a minute's time आप
उस लीड को एक प्रपोजल भेज सकते हैं, विच इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी इनिशियल लेवल प्रपोजल, नॉट द फाइनल कोटेशन. And that's actually customer, so we are getting a good traction, good engagement on from our partners who are using it. And as you can see, the value proposition is also very important from a EPC point of view, because जितना जल्दी आप अपने customer के साथ engage होंगे, that will create a different impression on him. So I'll request all of you to try this out and also share the feedback with us through RMs or through other customer success team. And we'll keep walking in that direction, in the direction to empower our EPC partner. Gradually, we'll also introduce the site survey and lead management. Yeah, sure, we will. Gradually, we'll be introducing more features on this based on the feedback or whatever we are getting from the EPC. The idea is to create this as a one-stop solution, जहाँ से हमारे EPC अपनी सारी जो complexities हैं उसको ease out कर सके. So thanks for attending today's webinar. And anything else? Right. Yes, and happy to do business with you all. Please feel free to contact us, write to us, and we shall be more than happy to take our relationship further. Partner app, there is no QR code. Okay, so you can find the partner app on the, if you, so this is the QR code you can scan to directly go to the web, to the mobile app. और यहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपना कस्टमर जर्नी स्टार्ट करते हैं. इट इज़ वेरी इजी. You just need to enter your mobile number and enter some basic company details and email ID. That's all. And once that happens, then after that you can start using the partner portal. For any question, you can reach out to us. Yeah, sure, we will. Thank you very much. Thank you everyone for joining today's session. And next webinar series will be, the webinar will be on this particular topic. So this is our in-house e-commerce platform called Sunstore by Aerem. And I hope everyone else will, join. We'll meet today again. Sure. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Not alone. Most EPCs face common challenges like lack of solar loans and supply chain finance. Are you a solar EPC struggling to grow your business in the competitive solar industry? You're not alone. Most EPCs face common challenges like lack of solar loans and supply chain finance, complex solar designs, multiple solar monitoring platforms, and difficulty in procurement and delivery of quality solar equipments. Does this sound familiar? Handling these challenges on your own can be overwhelming. But what if we told you there's an all-in-one solution designed to help you overcome these hurdles? Introducing the Aerem Partner app, the ultimate tool for EPCs to grow their solar business seamlessly. Need loans for your customers? Apply for solar loans easily through the app and get regular status updates. Apply for business loans for timely project execution and ensure customer satisfaction. Get expert solar design support with accurate layouts, PV assist reports, and more. Tailored for your projects, monitor all your solar plants at one platform with our hardware-independent plant monitoring system. Aerox, simplify your procurement process with Sunstore, your one-stop shop for solar hardware procurement. With the Aerem Partner app, growing your solar business has never been easier. Say goodbye to challenges and hello to opportunities. Download the Aerem Partner app today. It's absolutely free.